Thank you for coming. And it's a good day to announce the launch of 2 shows. Basically today we got a rating for 40th week, and our channel Sony did extremely well, and KBC has been a #1 show. The reason I'm telling you all this thing, this show is going to replace that. So the responsibility of ensuring the viewership continue and the viewers, Sony viewers are entertained, lie on 2 extremely unique producers. Actually, one producer was a intern of the other producer a few years back. So we have a 27-year-old producer of Deewaana Tha Haasil. Few years back, he started his life. He's from Indore. He came to Bombay and started his life being intern with Siddharth Malhotra. And that's the reason we want to launch this show. So the Guru and the Chela both are here. So we'll launch, basically there are 2 shows. One launches at 10 o'clock, Deewaana Tha, which is a love story, and Pratik will speak more about it. The second show is Haasil. Haasil is extremely ambitious show for us. The brief to Siddharth was to create something which has not been created in television, finite thriller. A finite thriller which it's very episodic, you know. Every episode there is a reason to come and watch the next episode. But I'll come to Haasil. First let's introduce our team behind Deewaana Tha. I think this Pratik's labor of love. He has been at it for quite some time. So I would invite Pratik. He's a very young and this is his first show. Collaborating with him from Sony is Anshuman Sinha, who is here. Anshuman and his team. So between these 2 teams, they have come up with a show which we believe is something which is very new, fresh, and will set a kind of love story which has never been seen on television. Before Pratik speak and he speaks a lot, we'll see a ये पहला शो मेरी जिंदगी का है. And I went to Danish and Sameer and me worked on the full show. पूरी कहानी फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक लिखी गई है. तो आज हमें ये पता है कि ये खत्म कहाँ पे हो रही है, ये फाइनल एंड कहाँ पे हो रही है, हर हफ्ते की हाई पॉइंट क्या है, हम कहाँ पे जा रहे हैं. और जब हम गए भी दानिश के पास, वो लेके गए थे कि हम इतनी मेहनत करेंगे जैसे ये हमारा पहला शो है और जैसे हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ प्रूव करना है इसके साथ. तो ये हमारे लिए हमारी शोरीन है और उतनी मेहनत और लगन से काम की है हमने. आई रियली थैंक दानिश, आशीष, there's Akash here, there's Anju, there's Anupama, which is our creative team. I thank all of them, and above all Sameer, who's been with me with Ek Hasina Thi, all my shows, a lot of my shows which I worked with him. Sameer, please come on. Please come on. I cannot share this, I cannot be on the stage had it not been for him, so he deserves to share the stage with me.
आशीष जी आप ये वी आर फैमिली को नहीं, या आई थिंक ये कास्ट आपने देख लिया, प्रोमो आपने देख लिया, शो रील एक्चुअली आई विल से तीन ही शब्द है, इट्स अ बेसी रेसी एंड क्लासी शो। बहुत दिनों बाद ऐसा शो टेलीविजन पे आप लोग देखेंगे। रिसेंट हिस्ट्री में तो मुझे ध्यान नहीं कोई इस तरह का शो आया हो, तो आई थिंक बहुत जल्द आएगा। दानिश ने मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ये जो आज हो गया है उसको आगे कैसे रिपीट करें, ये इसलिए शब्द नहीं निकल रहे। Answer both, sir. Say about the show, I'm delighted. As I told you, both the shows was in making for quite some time. And there are some set of people who I really love to work personally. Both Siddharth and Pratik have been very lucky to me. Nikita was one phase that we launched 2 years back when I just joined Sony, and we believe that she's a perfect Sony girl. Whatever we wanted to, so there is certain amount of. And if you look at Sony heroine, typically are slightly different than they're urban, they're educated, they have their point of view. So in both Nikita as well as Donald, you'll see two Sony girls, and we are delighted to have her back after a small gap. I've worked with Varsal in past along with Siddharth in my previous job, and he's a damn good actor. But this time he's going to surprise you. He's going to do something which he has not done so far. So I'll leave it at that. I'll tell you a little bit about Namik and Vikram. It took, when we started our journey 2 years back, it was very difficult to get some good actor to act for Sony show because the fiction shows were not doing very well, And Vikram gave me a lot of pain for what I won't talk about the show, but it seems he had signed for a show which Pratik was doing that point in time. But finally, I'm very happy to get Vikram back to do a Sony show, and Namik, good to have him back. These are the 4 faces we had when we started this journey 2 years back. Namik, Nikita, Syed and Erika. We launched 2 shows 2 years back in February, which was Ek Duje Ke Vaste and Kuch Rang, and both of them ran for a different slot and for different period. But we are extremely proud of both this show, and I believe that time Sony was around 80 or GRP. We struggled to get some viewership, distribution were not in place, but in terms of the show, I still think that those were the 2 best show Indian television has produced in the last 2 years. And this year, I think we are slightly in a better place. We have our distribution in place, the channel is slightly more robust, channel is looking good. We have KBC, Super Dance and a lot of other shows firing for us. So this year, I think these are the 2 best shows that you will see on television, and this time they will do well also. Hi, congratulations. कभी सोचा था आपने कि टीवी करोगे, क्या ये this came on your way and this being a grand show like a very big canvas लगता है actually इसका, तो that was the reason or? Honestly, I'll tell you a little story. Siddharth very kindly called me. He said, we want to take the screen test of the girl. Can you come and do a little scene with us? So when I went to do the screen test, I saw that the girl is quite amazing, and she seems to be a fantastic actress. So am I the reason why the screen test is happening? So the truth was, that's the truth. I was the screen test, and but honestly, I'm very obliged to Siddharth. I think he saw something in me that I didn't see, and he wanted to cast me for this fantastic character called Ranveer Rajan, just somebody I was dying to play all my life. And I'm just so happy that Sony TV and this network is taking risks in making such shows, because a new era has come, a new decade has passed, and people want new exciting things. And I think the combination of Alchemy and Sony on this production has just been fantastic. They both have surpassed our expectations by 100%. So
Is television really the new small screen? I don't know. 68% of India watches television. So I'm happy to be here. I'm really, really glad that I was convinced through a screen test. And thank you, Siddharth, and thank you, Danish. Everybody religiously talks about you in the network, and you're quite the captain, I have to say, because even though I've met you for the first time, I think we can see the respect you have earned amongst your peers. Thank you for having us. Thank you for having the show. जब हमने एक हसीना थी लिखी थी, and we were working on that, हमें पूरे 9 महीने की कहानी पता थी. 10 महीने गई कहानी, 1 महीना नहीं पता था. पर वो 9 महीने जो आपने शो में देखा, वही लिखा गया था और वही दर्शाया गया. तो हमें ये समझ में आया कि अगर एक थ्रिलर को टॉट एंड टाइट रखना है, क्योंकि एक हसीना थी मेरे लाइफ करियर में, मैंने संजीवनी से शुरू किया है, दिल मिल गया, 1000 में काफी शोज किए. एक हसीना थी मेरे जो बॉम्बे के जो अंकल हैं, आंटीज हैं, जो कहते हैं ए क्लास बी क्लास, वो भी देखते थे सब कुछ रोक के. तो टू गेट दैट थ्रिलर, एंड आज टाइम नहीं है सर किसी के पास, अगर मेरे होता चैनल स्विच हो जाता है, तो उस तरह की राइटिंग जहां पे हर तीसरे सीन में दूसरे सीन में एक ट्विस्टर डाला जाए. और हम कहते रहते हैं टीवी, मतलब टीवी कब बनेगा इंटरनेशनल, कब बनेगा, तो हमारी बजट रिस्ट्रिक्शंस होती है. तो उसके तहत फिर हमने ये प्लान किया कि हम इसको लिख के फिर आउटडोर शूट करेंगे ताकि हर तरह से ठीक हो जाए. एंड इसलिए हमने ये पूरी कहानी लिखी गई है. सो इट वर्क्स फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर राइटिंग बोथ वेज. पर ये चैनल को देना पड़ेगा, क्योंकि चैनल टीआरपी के नाम पे काफी चीजें बदलती हैं. इसमें कन्विक्शन दानिश जी और आशीष जी का है पूरा, कि वो जरा लिखो. तो आज हमने शो लॉन्च नहीं किया है, और जैसे उन्होंने कहा 50वां एपिसोड इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. आई एम ओवर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट दैट यू कैन नॉट से इट्स अ बैड शो. आई फाइनलाइज्ड 13 एपिसोड्स टिल नाउ, एंड ईच सीन इज वन बेटर देन द अदर. But when it comes to, and I'm personally involved in it, so I take all the credit for it and all the big backs for it when it comes to failure. But I don't know, I don't have Mr. Bachchan. I wish we all had Mr. Bachchan, but we have Sony, and we'll try. I think if people like the show, they connect with it, it will get somewhere. It should go there. Honestly. You know, honestly, like everybody says, I think working on a film is like a holiday right now, because we have to clock 15 to 17 minutes. I mean, when you come from a film to television and you realize that, really, does that happen? And I have been a little clueless about a lot of things that I'm learning along the way. But the truth is, you know, as difficult as it was, as an actor, it really sharpened my skills up, because it made me prepare for things that were unexpected. And I think what happened along the way was I learned new skills that I didn't have before. One was have a great presence of mind, because you really need to, you know, you need to think for everybody, not just for yourself. But, you know, having said that, I think without a doubt, you know, especially because Haasil is a, you know, it's a location-based shoot. It was much harder to execute those number of minutes, you know, as opposed to a set where the lights are just all there and you just keep shifting, you know, from one place to the other. It was very difficult to get quality work at the same time clock 15 minutes a day. But having said that, you know, the struggle was the fun. And I think we all had a hell of a time, you know, kind of getting it. But when we saw the results, which, you know, we can see on the promos, I think it was all well worth it. So here's to television, my, not my Karam Bhumi, my Dharam Bhumi, is it? Yeah. एपिसोड देखता हूँ. वो जो मेरे प्रीवियस बॉडी ऑफ वर्क है उसमें कुछ शो ऐसे थे जो कुछ 5-5, 6-6, 7-7 साल चले हैं. बट नाउ सिंस लास्ट 2 years मैं सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहानी का एंड पहले लिखूँ, और जितनी भी चीज़ें हैं दैट शुड मूव टुवर्ड्स दैट एंड. सो एक ग्रिपिंग, एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग स्टोरी हम लोग दे पाएँ. But a big yes for the show. आप लोगों ने हमेशा मुझे इतने सालों से कॉमेडी करते हुए देखा है. I have a very bubbly, very vivacious image. You know, whatever I've done, it's comic roles and, you know, lively roles. Here I am
I'm very proudly saying thank you very much, Pratik, to take the risk to give me something so different that I've never done before. It's negative, it's positive, it's colorful, it's got shades, it's somebody who is going to connect with the other world, with the girl and the boy. She's going to be a mediator to them. Usko koi bhi naam de do, Omni is going to rock. So yeah, just watch out. Thank you for the question. दानिश सर मिस समथिंग दैट मैंने अपनी एक्टिंग की करियर भी सोनी से शुरू किया था, जस्ट मोहब्बत से, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम channel was number 1, show was number 1. Today the channel is number 1. I am super excited. I'm very happy कि पहले जो किरदार किया था एक हसीना थी में वो आउट एंड आउट नेगेटिव था. ये कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है. He's a brat, impulsive, जो मोमेंट में कुछ कर देता है फिर रिग्रेट करता है. So it's not negative and it's definitely very different from what I've done in एक हसीना थी. Yes, it's a thriller, fast paced. But there is no similarity between एक हसीना थी and so thank you so much for the question. And दीवानगी, in fact हम तीनों की दीवानगी शो में दिखाई गई है, not just नमिल and मेरी. इसमें आपको डोनल की दीवानगी भी दिखाई देगी जो शरण्या का रोल प्ले कर रहे हैं. So because it's a thriller show, so I don't want to reveal much because क्या होता है कि थ्रिलर शो में जैसे आप कुछ बताते हो तो आप सस्पेंस और उसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स बाहर कर देते हो, इसका शो का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है. सो आई डोंट वांट टू रिवील अबाउट व्हाट काइंड ऑफ दीवानगी इज देयर, बट दीवानगी बहुत ज़्यादा है. सो आई वुड जस्ट से कि आप 2 एपिसोड देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस जो दीवानगी आप एक्सपेक्ट करो उससे बहुत ज़्यादा है. हाँ, तो मतलब हिंदी में वो कहावत है ना कि पिक्चर बाकी है, लेकिन अभी हम टेलीविजन में तो एपिसोड बाकी है. तो हम देखते हैं एपिसोड देखने के बाद क्या क्या हासिल हो चुका है. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ज़िंदगी में 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है सबको हासिल करनी है. एक वो पावर, एक है प्यार, एक है मनी, एक है इन्फ्लुएंस. और हमारा जो स्टोरी लाइन है इसके इर्द गिर्द में, तो मैं यही कह सकता हूँ कि शायद सिद्धार्थ को पता होगा कि क्या होता है अंत में, लेकिन हमें अपना जो एपिसोड है इस एपिसोड तक ही पता होता है, और शायद 2-3 एपिसोड आगे तो वी आर एज क्लूलेस एज व्हाट्स हैपनिंग अहेड, बट ही इज गिवन अस अ गुड नैरेटिव ऑफ क्या आपका कैरेक्टर है, क्या करना है, क्या कैसे उसको निभाना है. और जब भी मैं कोई कंफ्यूजन में होता हूँ मैं सिद्धार्थ को इमीडिएटली फ़ोन करता हूँ और मेरे डायरेक्टर से बात करके कि यार ये क्योंकि क्या कैसे खेलूँगा मैं ये, हाउ विल आई ग्राफ दिस कैरेक्टर. तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्साइटिंग, द स्क्रिप्ट इज जस्ट फैंटास्टिक, और मैं यही कहूँगा आप थोड़ा इत्मीनान रखिए और सब कुछ हासिल हो जाएगा. चैनल हो गया है तो आई थिंक ऑल ऑफ अस स्टैंडिंग हियर ऑन दिस स्टेज वी आर ऑल अ फैमिली, सो कंपटीशन का कोई सवाल नहीं होता है. तो आई थिंक इफ बोथ द शोज डू वेल टुगेदर, नथिंग लाइक इट, इट्स गुड फॉर द चैनल. Same time slot नहीं है, it's the same channel, so I don't know where the competition will come in. If they do well, the channel does well, we do well. So I hope they achieve great heights. I hope we achieve great heights, and I hope Sony achieves great heights. So no competition, not at all. पहले कहा कि वो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल मुझसे पूछा कि यार स्क्रिप्ट कैसा है और मेकर कौन है और कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा. आई थिंक दीज आर वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस कि जब भी कुछ आप चीज़ करने जाते हो तो यही 3 सवाल उठते हैं कि यार प्रेजेंटर कौन है, स्क्रिप्ट कैसी है, और ये डायरेक्टर कौन है या ऐसे कुछ. तो मैंने साफ कहा कि कौन इसके हाथ के पीछे है और व्हाट हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज. और उन्होंने साफ मुझे मतलब दुआएं दे दी और बोला कि जा बेटा कर जो करना है. तो आई थिंक दिस इज बेसिकली व्हाट इट रियली बॉइल्स डाउन टू. अगर जो भी मीडियम आप पकड़े, कल को आप अगर फिल्म करना है या डिजिटली करना है या टेलीविजन करना है, आई थिंक दीज प्रिंसिपल्स स्टे द सेम फॉर एनी एक्टर. और आपका दूसरा सवाल, सॉरी, फादर से कुछ डिस्कशन हुई और क्या नजरिया था पहले टेलीविजन को लेकर के, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि मैं सीख रहा हूँ अभी भी. यही मैम कि अभी उसका उनका एक ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट उसूल है कि डिसिप्लिन रहो. अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो हर चीज़ नहीं हुआ है. ये तो जब स्टोरी आएगी, जब सीरियल आएगा तभी पता चलेगा कि क्या स्टोरी है एग्जैक्टली.
बस नहीं वो भूत बन के पीछे लगा हुआ है ना वो एक्चुअली जब शो मेरे पीछे लगा, वो मेरे पीछे लगा। किसके पीछे कौन लगा है, इट्स अ ट्विस्ट दैट जब शो ऑन एयर होगा तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो मुझे यही पूछना था, आप बिलीव करते हैं इस तरह की बातों पे? मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ। देखिए, इफ देयर इज अ गोस्ट तो वो आप सोचते हैं जितना तो आपको वो चीज़ दिखने लगता है या महसूस होने लगता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, इट्स ऑल माइंड पावर, मेंटल पावर। सो आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होने लगता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और आपके पीछे वाले ऐसा सोचते हैं? आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, बट आई एम सरप्राइज कि डॉन ने ऐसा बोली कि हमारे टेस्ट शूट के दिन ने हमारे सेट में एक भूत दिखा था, तो आई एम सरप्राइज कि सडनली उनका पूरा नजरिया बदल गया। बट नो, आई डोंट बिलीव इट पर्सनली। That day I thought like that, that's why. Alright, so on that note, I think we'll come to the end of the question and answer. Please give them a huge round of applause, everybody. Zordar Talia. And all the best for Deewaana Tha and Haasil. Thank you.